Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आकुरु काहननो तुच्छ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव मांगलिक करके समयसार यानी आत्मा का परिपूर्ण त्रिकाल शुद्ध स्वरूप दिखाना चाहते हैं। इस समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 93 उसकी टीका 93 गाथा का मूल विषय है ज्ञान से कर्म उत्पन्न होते नहीं। ज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से कर्म यानी भाव कर्म यानी राग आदि की उत्पत्ति होती नहीं। ये बात इस गाथा में सिद्ध करना है। फिर से गुजराती में कर्ता कर्म अधिकार चाले छे। एनी गाथा 93 एनी टीका चाले छे। 93 गाथानो मूળ વિષય છે જ્ઞાનથી કર્મ ઉત્પન્ન થતું નથી। ત્યાં જ્ઞાનનો અર્થ છે સમ્યક જ્ઞાન। કર્મનો અર્થ છે ભાવ કર્મ એટલે રાગ આદि। તો આ ગાથામાં એમ સિદ્ધ કરવું છે કે सम्यक ज्ञान थी रागादियों उत्पत्ति थती नहीं। अब देखो टीका, उसके शब्द क्या है। ज्ञान से ये आत्मा पर को और स्वयं को परस्पर विशेष जानने से
तब पर को स्वयं रूप नहीं करता और स्वयं को पर रूप नहीं करता। स्वयं ज्ञानमय हुआ थका कर्मों का अकर्ता प्रतिभासते हैं। यहाँ सेंटेंस पूरा होता है। देखो अब उसके शब्द शब्द का अर्थ क्या है। टीका में ज्ञान से, उसका अर्थ है सम्यक ज्ञान से। ये आत्मा का अर्थ है ज्ञानी आत्मा। पर को, यहाँ पर का अर्थ है राग आदि भाव कर्म। राग आदि को पर क्यों कहा, तो कि पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है इसलिए पर कहा। पर के संयोग से उत्पन्न हुआ है इसलिए पर कहा। राग आदि की उत्पत्ति में पर निमित्त है इसलिए उसको पर कहा। और पर को और स्वयं को, पर का अर्थ राग आदि, स्वयं का अर्थ ज्ञायक। तो राग आदि और ज्ञायक के बीच में परस्पर का अर्थ है राग में और ज्ञान में विशेष का अर्थ है पृथकपना, विशेष का अर्थ है भिन्नता, विशेष का अर्थ है जुदाई। तो रागादि और ज्ञायकपना परस्पर पृथक है, भिन्न है, ऐसा ज्ञानी जानता है। तब पर को यानी राग आदि को स्वयं रूप यानी ज्ञायक स्वरूप नहीं करने से और स्वयं को यानी ज्ञायक को पर यानी राग आदि रूप नहीं करने से स्वयं ज्ञानमय हुआ थका। ज्ञानमय यानी वेद ज्ञानमय हुआ थका कर्मों का यानी राग आदि का अकर्ता प्रतिभासते हैं। अब उसका विश्लेषण क्या बताया कि सम्यक ज्ञानी का ज्ञान ये ज्ञायक है और ये रागादि है। ऐसा ज्ञायक और रागादि के बीच में पृथक पृथक जानकर रागादि को ज्ञायक रूप नहीं करता है और ज्ञायक को रागादि रूप नहीं करते हैं।
जब जीव ज्ञायक को रागादि रूप नहीं करेगा और रागादि को ज्ञायक रूप नहीं करेगा, ऐसे जीव को ज्ञानमयी यानी वेद ज्ञानमयी, वो जीव कैसा है? वेद ज्ञानी है। जब ऐसा वेद ज्ञान होता है तब राग आदि का लक्ष्य छूट जाता है। ज्ञायक में तन्मयता हो जाती है। जिसको राग आदि का लक्ष्य छूट गया और ज्ञायक में तन्मय हो गया, ऐसे सम्यक ज्ञानी जीव को राग आदि की उत्पत्ति होती नहीं। तो राग आदि की उत्पत्ति होती नहीं, इसलिए कहा कि ऐसा वेद ज्ञानी, ऐसा सम्यक ज्ञानी कर्मों का यानी राग आदि का अकर्ता दिखने में आता है, अकर्ता जानने में आता है। क्या कहा? क्या कहा? जिस जीव का ज्ञान उत्पन्न होने के साथ ये ज्ञायक है और ये राग आदि है, ज्ञानानंद स्वाभाविक ज्ञायक और विभाव स्वरूप राग आदि दोनों का स्वरूप की भिन्नता का भान करना दोनों की भिन्नता का ज्ञान करना, ज्ञान होने के साथ राग आदि प्रति तुच्छता और ज्ञायक प्रति उपाधि बुद्धि राग का लक्ष्य छूटना, ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य हो जाना, राग आदि का आश्रय छूट जाना, ज्ञायक स्वभाव का आश्रय हो जाना, उसी समय जो ज्ञान है कि जो ज्ञान ज्ञायक और राग आदि को, ज्ञायक को स्वपने जानता है, राग आदि को परपने जानता है, ज्ञायक को स्वभाव रूप जानता है, राग आदि को विभाव रूप जानता है, ज्ञायक को ज्ञान आनंद स्वरूप जानता है, राग आदि को दुख रूप जानता है। ऐसा ज्ञान ज्ञायक की महिमा आने से राग आदि का उसको सहज लक्ष्य छूट जाने से, राग आदि में हूपना छूट जाने से, ज्ञायक में हूपना हो जाने से वो ज्ञान ऐसा जानता है
कि मेरा ज्ञायक रागादि रूप नहीं हुआ, रागादि रूप मैं नहीं हुआ, और रागादि रूप मेरे रूप नहीं हो सकता, उसी समय तीक्ष्ण ज्ञान प्रज्ञा छीनी भेद ज्ञान नायक और राग के बीच में भेद ज्ञान करके ज्ञायक स्वरूप को ग्रहण करके वो ज्ञान उपयोग ज्ञायक में एकाग्र हो जाने से जीव को रागादि की उत्पत्ति होती नहीं है। इसलिए वेद ज्ञानी सम्यक ज्ञानी कर्मों का अकर्ता प्रतिभासता है। कर्मों का अर्थ रागादि का अकर्ता प्रतिभासता है। फिर से गुजराती में टीका। ટીકાના શબ્દો છે જ્ઞાનથી આ આત્મા પરનો અને પોતાનો પરસ્પર વિશેષ જાણતો હોય ત્યારે પરને પોતારૂપ નહીં કરતો અને પોતાને પર નહીં કરતો, પોતે જ્ઞાનમય થયો થકો, કર્મોનો અકર્તા પ્રતિભાસે છે। આ વાક્યના જે શબ્દો છે એનો અર્થ શું છે? પહેલા તો કે જ્ઞાનથી, અહીંયા જ્ઞાનનો અર્થ છે ભેદ જ્ઞાન, સમ્યક જ્ઞાન। આ આત્મા એટલે જ્ઞાનીનો આત્મા। પરનો, પર એટલે રાગાદિ, રાગાદિની ઉત્પત્તિ પરના લક્ષ્ય થઈ હોવાથી રાગાદિને પર કહ્યા છે। રાગાદિમાં પર નિમિત્ત હોવાથી રાગાદિને પર કહ્યા છે। રાગાદિની ઉત્પત્તિ પરના લક્ષ્ય થઈ હોવાથી રાગાદિને પર કીધા છે। તો કે છે સમ્યક જ્ઞાનથી આ જ્ઞાની આત્મા રાગાદિનો અને પોતાનો ત્રણ વાત લીધી। એક સમ્યક જ્ઞાન લીધું, એક રાગ લીધો અને એક પોતે એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવ લીધો। રાગ અને જ્ઞાયક સ્વભાવ પરસ્પર રાગાદિ છે જ્ઞાયક નથી, જ્ઞાયક છે તે રાગાદિ નથી, એવો પરસ્પર તફાવત, પરસ્પર વિશેષ એટલે એવો ભેદ, પરસ્પર વિશેષ એટલે પરસ્પર પૃથકપણું, જ્ઞાયક અને રાગ વચ્ચે પરસ્પર પૃથકપણું, જુદાઈ। રાગ જ્ઞાયક સ્વભાવથી જુદો છે। કેમ? તો કે રાગ આત્મામાંથી નીકળી જાય છે, રાગ આત્મામાંથી નાશ પામી જાય છે।
માટે રાગ આત્માનું ત્રિકાળ સ્વરૂપ નથી. અર્યંત સિદ્ધ પરમાત્માને સાદી અનંતકાળ માટે રાગનો નાશ થઈ ગયો. રાગાદિ હવે અર્યંત પરમાત્મા સિદ્ધ પરમાત્માને ઉત્પન્ન થવાના નથી. જેમ સર્પ શરીર ઉપરની કાચડી ઉતારી નાખે એમ અર્યંત સિદ્ધ પરમાત્માએ રાગાદિરૂપ કાચડી આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશેથી ઉતારી અને બહાર કાઢી નાખી. તો જે વસ્તુ આત્મામાંથી નીકળી જાય એ આત્માનું સ્વરૂપ નથી. તો કે છે જ્ઞાની શું કરે છે? તો કે જ્ઞાનીનો આત્મા જ્ઞાયક અને રાગ પરસ્પર જુદા છે, પરસ્પર પૃથક છે, પરસ્પર ભિન્ન છે, બંને વચ્ચે ભેદ છે, બંને વચ્ચે અંતર છે એમ જ્ઞાનીનું જ્ઞાન જાણે છે. આવું જાણપણું થયું ત્યારે પરને પોતારૂપ નહીં કરતો રાગાદિ એ મારું સ્વરૂપ છે એવું જ્ઞાની શ્રદ્ધાન કે જ્ઞાન કરતા નથી. પર કહેતા રાગાદિ પરને પોતારૂપ નહીં કરતો. આ રાગાદિ મારું સ્વરૂપ છે એવું એમાં હુંપણું કે એવું અજ્ઞાન જ્ઞાનીને ઉત્પન્ન થતું નથી. એ રાગાદિ જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ નથી. એ રાગાદિ જ્ઞાયકથી ભિન્ન છે. એ રાગાદિ આશ્રવ તત્વ છે. હું તો ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ જીવ તત્વ છું. જીવ તત્વથી આશ્રવ તત્વ ભિન્ન છે. એવું યથાર્થ જ્ઞાન થતું હોવાને કારણે જ્ઞાની રાગાદિને પોતા રૂપે નહીં કરતો અને પોતાને પરરૂપ એટલે રાગાદિ રૂપે નહીં કરતો થકો. રાગાદિને પોતા રૂપે કરતો નથી અને પોતાને રાગાદિ રૂપે કરતો નથી. આવું જેને યથાર્થ જ્ઞાન છે એવો જીવ પોતે જ્ઞાનમય થયો થકો. એ સમ્યક જ્ઞાની થયો. સ્વભાવ વિભાવને ભિન્ન જાણી લીધા. જાણીને વિભાવને ત્યાગી દીધા. એ તો જ્ઞાની થઈ ગયો, જ્ઞાનમય થયો થકો. રાગાદિમાં હું પણ ન કર્યું, રાગનો રાગ ન થયો. ત્યારે શું થયું? તો કે કર્મનો અકર્તા પ્રતિભાસે છે. કર્મો કહેતા રાગાદિનો અકર્તા પ્રતિભાસે છે. તે સ્પષ્ટતાથી સમજાવવામાં આવે છે.
હવે એનો દૃષ્ટાંત આપીને સમજાવે છે. देखो अब दृष्टांत. जिस प्रकार शीत उष्ण का अनुभव का अर्थ है ज्ञान. शीत उष्ण का ज्ञान कराने में समर्थ एवी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था. क्या कहा? ये शीत उष्ण अवस्था तो पुद्गल की है, लेकिन ज्ञान उसको जान सकता है. ज्ञान शीत उष्ण नहीं होगा. शीत उष्ण तो पर पदार्थ है, पुद्गल है. शीत उष्ण वो तो स्पर्श गुण की, और स्पर्श गुण पुद्गल का. पुद्गल परमाणु में अनंत गुण है. वो अनंत गुण में एक स्पर्श नामनो गुण, स्पर्श नाम का गुण असाधारण गुण है. वो स्पर्श गुण की अवस्था शीत उष्ण होती है. तो जो शीत उष्ण अवस्था हुई वो ज्ञान के माध्यम से उसको जान सकते हैं, लेकिन ज्ञान शीत उष्ण होता नहीं. शीत उष्ण तो हुआ है पुद्गल, वो तो पुद्गल के परिणाम है. ये बात को सिद्धांत में उतारना है कि रागादि वो तो पुद्गल के परिणाम है. ज्ञान उसको जान सकता है, लेकिन ज्ञान रागादि रूप होता नहीं. जैसा ज्ञान शीत उष्ण रूप नहीं होता, वैसी तरह ज्ञान रागादि रूप होता नहीं. जैसी तरह शीत उष्ण अवस्था पुद्गल की है, वैसी तरह रागादि पुद्गल के परिणाम है. जैसे शीत उष्ण अवस्था ज्ञान में जानने में आती है, वैसी तरह रागादि परिणाम भी जीव में जानने में आता है. वो रागादि परिणाम को जानने में ज्ञान समर्थ है, और रागादि अपना स्वरूप जनाए ज्ञान को, उसमें रागादि भी समर्थ है. समझ में आता है क्या कहा? तो सब वेद ज्ञान की बात है, वेद ज्ञान कराना है, और ये अंतरम वेद ज्ञान की बात है. ज्ञायक स्वभाव में से उत्पन्न हुआ ज्ञान और पुद्गल में से उत्पन्न हुआ रागादि, रागादि को ज्ञान जान सकता है, लेकिन ज्ञान रागादि रूप हो नहीं सकता. रागादि है तो पुद्गल के परिणाम, लेकिन रागादि अपना स्वरूप ज्ञान को जना सकता है, लेकिन रागादि ज्ञान रूप हो नहीं जाता. आत्मा अरूपी
अरूपी आत्मा ज्ञान और सुख स्वभावी। आश्रव तत्व स्वभाव से रागादि। आत्म तत्व और आश्रव तत्व दो तत्व भिन्न भिन्न तत्व। आत्म तत्व का लक्षण ज्ञान है, सुख है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। आश्रव का लक्षण राग आदि है। आत्मा, आत्म तत्व और आश्रव तत्व के बीच में ज्ञाता ज्ञेय संबंध है, लेकिन आत्मा आश्रव तत्व रूप नहीं होता, आश्रव तत्व आत्मा रूप नहीं होता। ज्ञायक रागादि रूप नहीं होता, रागादि ज्ञायक रूप नहीं हो सकता। ज्ञायक स्वभाव से जाणन स्वभावी। एक समय में तीन काल तीन लोक को जान सके, इतना शक्ति रूप सामर्थ्य वाला ज्ञायक राग को जानता है, लेकिन राग रूप होता नहीं। राग भी ज्ञेय तत्व है। ज्ञेय तत्व होने के कारण रागादि अपना स्वरूप ज्ञान को जना सकता है, लेकिन रागादि ज्ञान स्वरूप के ज्ञायक स्वरूप हो नहीं सकता। राग है इसलिए ज्ञान ने जाना, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो स्वभाव से स्वपर प्रकाशक होने के कारण स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, और स्व पर के बीच में भेदरूप ज्ञान भी कर सकता है। ख्याल में आता है। क्या कहा दृष्टांत में? उसी प्रकार अनुभव कराने में समर्थ अनुभव कराने में समर्थ यानी ज्ञान कराने में समर्थ ऐसी राग द्वेष सुख दुख आदि रूप राग द्वेष और इंद्रिय सुख दुख आदि रूप परिणामों की अवस्था राग द्वेष इंद्रिय सुख दुख आदि पुद्गल परिणाम है। कौन से परिणाम है? पुद्गल परिणाम। ज्ञान रूप परिणमन जीव की अवस्था है। ज्ञान रूप परिणमन ज्ञायक में से आया है।
ज्ञान रूप परिणमन ज्ञायक के साथ अभेद है। ज्ञान रूप परिणमन ज्ञायक स्वभाव का अंश है। रागादि इंद्रिय सुख दुख पुद्गल के परिणाम है, अचेतन परिणाम है, पुद्गल की अवस्था है। ज्ञान के लिए वो ज्ञेय है। तो राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था, तो पुद्गल परिणाम की अवस्था किसके साथ अभिन्न है? तो कि पुद्गल के साथ। ज्ञान रूप परिणमन आत्मा के साथ अभेद, राग द्वेष सुख दुख आदि परिणाम पुद्गल के साथ अभेद। इसलिए आत्मा से सदा, आत्मा यानी ज्ञायक स्वभाव से सदा, सदा यानी तीनों काल, रागादि यानी पुद्गल के परिणाम अत्यंत भिन्न है। अज्ञानी कहता है कि राग मुझ में होता है, अज्ञानी कहता है कि राग मेरा स्वरूप है, अज्ञानी कहता है कि राग का मैं करता हूं। अज्ञानी कहता है कि राग का स्वाद मुझे आता है। राग का स्वाद तो दुखमय है, तो स्वभाव से दुखमय हो नहीं। रागादि इंद्रिय सुख दुख तो वर्तमान एक समय की पर्याय की योग्यता के कारण उत्पन्न हुआ है। राग द्वेष इंद्रिय सुख दुख आत्मा में तीनों काल उत्पन्न हो नहीं सकते, क्योंकि राग इंद्रिय सुख दुख वो आत्मा का कोई स्वभाव नहीं। पर का लक्ष्य करने से पर्याय की योग्यता के कारण राग द्वेष इंद्रिय सुख दुख उत्पन्न हुआ। तो यहाँ क्या बताया कि राग द्वेष सुख दुख आदि रूप जो परिणाम उत्पन्न हुआ उसका आत्मा ज्ञान कर सकता है। ये परिणाम तो है पुद्गल का, लेकिन ज्ञान स्वभाव से स्वपर प्रकाशक होने के कारण राग द्वेष सुख दुख आदि को जान सकता है, पुद्गल के परिणाम को जान सकता है। लेकिन ऐसी राग द्वेष सुख दुख आदि रूप अवस्था, उससे आत्मा, उससे ज्ञान, वो तो भिन्न है। ऐसी भिन्नता का ज्ञान करने वाला ज्ञान को वेद ज्ञान कहने में आता है। फिर से गुजराती में देखो, તેવી રીતે એટલે
હમણાં ઉપર સિદ્ધાંતમાં બતાવ્યું એ હવે દ્રષ્ટાંતમાં બતાવે છે. તે પ્રકારનો અનુભવનો અર્થ જ્ઞાન. તો તે પ્રકારનું જ્ઞાન કરાવવામાં સમર્થ એવી રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખાદિ રૂપ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા. પૂતગલમાં અવસ્થા ઉત્પન્ન થઈ. કઈ અવસ્થા ઉત્પન્ન થઈ? રાગ દ્વેષ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ. એ અવસ્થા છે તો પૂતગલની ઉત્પન્ન થઈ છે પૂતગલમાં, પણ એ અવસ્થા જ્ઞેયની અવસ્થા હોવાથી, એ જ્ઞેય તત્વ હોવાથી એ જ્ઞેય પોતાનું સ્વરૂપ જ્ઞાનને જણાવી શકે છે. તો પોતાનું સ્વરૂપ જણાવવાને સમર્થ એવી રાગદ્વેષ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખરૂપ અવસ્થા એ જ્ઞાને જાણી. પણ આ અવસ્થા જ્ઞાને ભલે જાણી, પણ એ રાગદ્વેષરૂપ અવસ્થા પૂતગલ સાથે અભિન્ન છે. કોની સાથે અભિન્ન છે? પૂતગલની સાથે અભિન્ન છે. અને પૂતગલ સાથે અભિન્ન હોવાને કારણે આત્માથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે. જો એ પરિણામ પૂતગલ સાથે અભિન્ન હોય તો સ્વાભાવિક છે કે આત્માથી સદાય ભિન્ન હોવી જોઈએ. તો કે એનાથી ભિન્ન છે અને તેના નિમિત્તે એટલે રાગાદિના નિમિત્તે થતું તે પ્રકારનું અનુભવ એટલે તે પ્રકારનું જ્ઞાન, એ જ્ઞાન થયું એ કોની સાથે અભિન્ન છે? તો કે એ જ્ઞાન આત્માની સાથે અભિન્નપણાને લીધે. જ્ઞાન આત્મા સાથે અભિન્ન, રાગાદિ પૂતગલ સાથે અભિન્ન. જ્ઞાન આત્મા સાથે અભિન્ન હોવાથી એ જ્ઞાનરૂપ અવસ્થા પૂતગલથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે. એક તરફ જીવ છે, બીજી તરફ પૂતગલ છે. જીવ કહેતા આત્માને પોતાના પરિણામ છે, પૂતગલને પોતાના પરિણામ છે. આત્માને જ્ઞાનરૂપ પરિણામ છે, પૂતગલને રાગાદિ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખના પરિણામ છે. જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ આત્મામાં થઈ છે, રાગાદિની ઉત્પત્તિ પૂતગલમાં થઈ છે. પણ જ્ઞાનમાં એવું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે કે એ જ્ઞાન સ્વ પર પ્રકાશક છે. સ્વને પણ જાણે, પરને પણ જાણે. અને રાગાદિ રૂપ પરિણામ પૂતગલમાં ઉત્પન્ન થયા છે, એ પૂતગલમાં એવું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે કે પોતાનું સ્વરૂપ જ્ઞાનને જણાવી શકે. એક તરફ જાણનાર છે, બીજી તરફ જણાનાર છે.
એ જ્ઞાન રાગાદીને જાણે, પણ કઈ રીતે જાણે? તો કે રાગાદીથી ભિન્ન રહીને જાણે. એ આત્મા, એ જ્ઞાન રાગાદી રૂપે થાય નહીં. અને રાગાદી કંઈ જ્ઞાનમાં પ્રવેશીને જ્ઞાનમય થઈ જાય નહીં. એવી પરસ્પરની જુદાઈને જુદાઈ તરીકે જાણનારું જ્ઞાન, એને ભેદ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ બધું ગુરુદેવે ખોલીને સમજાવ્યું છે. શું કહે છે? જ્યારે જ્ઞાનને લીધે આત્મા તે રાગ, દ્વેષ, સુખ દુઃખ આદિ અને તેના અનુભવનો એટલે જ્ઞાનનો પરસ્પર એટલે એક બાજુ જ્ઞાન છે, બીજી બાજુ રાગાદી છે. પરસ્પર વિશેષ જાણતો હોય, એટલે કે પૃથકપણે જાણતો હોય, ત્યારે તેઓ એક નથી પણ ભિન્ન છે. એટલે એકમેક અભિપ્રાયમાં પણ થયા નથી, એકમેક જ્ઞાનમાં પણ થયા નથી, એકમેક વસ્તુનું સ્વરૂપ પણ થયું નથી. એવું યથાર્થ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન જેને થયું, એ જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, એ જીવ સમ્યક જ્ઞાની છે. શું કહે છે? તેઓ એક નથી પણ ભિન્ન છે. એવા વિવેકને કારણે સ્વને સ્વપણે જાણવું અને પરને પરપણે જાણવું, એને વિવેક કીધો. તો કે છે શીત ઉષ્ણની માફક, અર્થાત જેમ શીત ઉષ્ણ રૂપે આત્મા વડે પરિણમવું અશક્ય છે, આત્મા શીત ઉષ્ણ રૂપે પરિણમવું અશક્ય છે, તેમ જીવને રાગાદી રૂપે પરિણમવું અશક્ય છે. જીવને ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ રૂપે પરિણમવું અશક્ય છે. ख्याल आवे छे? देखो फिर से क्या बताया? जब ज्ञान के कारण आत्मा वो राग द्वेष सुख दुख आदि का और उसके ज्ञान का, अनुभव का यानी ज्ञान का परस्पर का अर्थ है एक तरफ ज्ञायक है और उसका परिणाम ज्ञान रूप है, दूसरी तरफ पुद्गल है और उसका परिणाम राग द्वेष इंद्रिय सुख दुख रूप है. ये दोनों के बीच में परस्पर विशेष जानने से, विशेष जानना यानी पृथकपणे जानना, भिन्नपणे जानना होता है, तब वो एक नहीं, ज्ञान स्वरूप आत्मा रागादि स्वरूप नहीं, रागादि स्वरूप पुद्गल ज्ञानमयी आत्मा स्वरूप नहीं है. वो एक नहीं लेकिन भिन्न है. आत्मा ज्ञान रूप परिणमन किया है और पुद्गल ने रागादि रूप परिणमन किया है.
वो भिन्न भिन्न है। ऐसा विवेक के कारण, ऐसा भेद ज्ञान के कारण, विवेक का अर्थ भेद ज्ञान, विवेक का अर्थ स्वपर प्रकाशक ज्ञान, तो ऐसा स्वपर प्रकाशक ज्ञान के कारण शीत उष्ण की तरह जैसा शीत उष्ण रूप आत्मा, शीत उष्ण रूप आत्मा का परिणमन अशक्य है, वैसी तरह जिसके रूप यानी रागादि रूप आत्मा के द्वारा परिणमन अशक्य है, आत्मा रागादि रूप परिणमन कर नहीं सकता। क्या कहा? आत्मा रागादि रूप परिणमन कर नहीं सकता। क्यों? तो कि रागादि वो तो पुद्गल का स्वभाव है, जीव का स्वभाव ही नहीं। जीव का स्वभाव तो ज्ञान रूप रहना है। अब आगे ऐसे राग द्वेष सुख दुख आदि रूप अज्ञान आत्मा के द्वारा जरा भी नहीं परिणमता थका ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट होता है। जो ज्ञान रागादि के साथ तन्मय नहीं हुआ, वो ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन कर गया, तो ज्ञान का ज्ञानत्व क्या है? तो कि जैसा स्वभाव है वैसा मैं रहूं। तो ज्ञान स्वभाव ज्ञान रूप परिणमन किया, वो ज्ञान का ज्ञानत्व है, वो सम्यक ज्ञान है। ज्ञानत्व प्रकट करता हुआ यानी सम्यक ज्ञान प्रकट करता हुआ यानी वेद ज्ञान प्रकट करता हुआ स्वयं ज्ञानमय हुआ थका। अब आत्मा कैसा हो गया? सम्यक ज्ञानमय हो गया। ज्ञानमय का अर्थ है वेद ज्ञानमय हो गया, सम्यक ज्ञानमय हो गया। अब आगे ये राग को, ये मैं राग को जानता ही हूँ। रागी तो पुद्गल है, अर्थात राग तो पुद्गल करते हैं इत्यादि विधि से ज्ञान से विरुद्ध ऐसा समस्त रागादि कर्म का अकर्ता प्रतिभासते हैं। क्या कहा? कि मैं राग को जान सकता हूँ लेकिन रागमय हो नहीं सकता। राग ज्ञेय तत्व है, मैं ज्ञान तत्व हूँ। ज्ञान ज्ञेय को जान सकता है
लेकिन ज्ञेय रूप हो नहीं सकता। तो क्या बताया? ये मैं राग को जानता ही हूं। रागी कौन है? कर्म का उदय पुद्गल है। राग का कर्ता कौन? तो कि राग का कर्ता पुद्गल है। ऐसी अनेक विधता से ज्ञान से विरुद्ध, ज्ञान से विरुद्ध कौन है? ज्ञान स्वभाव है और राग आदि विभाव है। तो राग आदि ज्ञान से विरुद्ध भाव है। ज्ञान चैतन्यमय परिणाम है, राग आदि पुद्गलमय परिणाम है। इसलिए ज्ञान से विरुद्ध ऐसे समस्त रागादि कर्म का अकर्ता प्रतिभासते हैं। तो ज्ञानी राग का अकर्ता है, ऐसा सिद्ध किया। फिर से गुजराती में स्वयं ज्ञानमय हुआ थका। ज्ञानमय का अर्थ है वेद ज्ञानमय हुआ थका, सम्यक ज्ञानमय हुआ थका। રાજુભાઈ ગુજરાતીમાં પ્લીઝ. હા, સોરી. થેન્ક યુ. શું કહ્યું? કે પોતે જ્ઞાનમય થયો થકો. જ્ઞાનમય થયો થકો એટલે ભેદ જ્ઞાનમય થયો થકો, સમ્યક જ્ઞાનમય થયો થકો. આ હું રાગને જાણું જ છું. હું રાગને જાણું પણ રાગમય ન થઈ શકું. હું જ્ઞાનમય છું એ મારો સ્વભાવ છે. રાગ તો વિભાવ છે. તો સ્વભાવ વિભાવરૂપ થઈ ન શકે. જ્ઞાન છે એ આત્મતત્વ છે, રાગ છે એ પૂતગલ તત્વ છે. તો આત્મતત્વ પૂતગલ તત્વ થઈ ન શકે. પણ જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક હોવાથી, સ્વપર પ્રકાશકપણું એનો સ્વભાવ હોવાથી જ્ઞાન રાગને જાણે ખરું, પણ જ્ઞાન રાગમય થઈ ન શકે. પછી કે છે રાગી તો પૂતગલ છે, અર્થાત રાગ તો પૂતગલ કરે છે. વગેરે વિધિથી જ્ઞાનથી વિરુદ્ધ એવા સમસ્ત રાગાદિ કર્મનો અકર્તા પ્રતિભાસે છે. તો જ્ઞાની કોનો અકર્તા છે? તો કે રાગાદિનો અકર્તા છે, પણ જ્ઞાનમય પરિણામનો કર્તા છે. એવો સમય થયો છે. આવતીકાલે રાજકોટ અમારે ફૂલ ડે શિબિર છે પ્રવચન સાર ઉપર, સવારે 9:30 થી 12:30 અને 2 થી 5. એટલે કાલનો સ્વાધ્યાય નહીં રહે.
વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય.